Each of the following defines a relation on the set capital N of positive integers. First is R such that x is greater than y. R such that x is greater than y. Second is S such that x plus y equals to 10. And third is T such that x plus 4y equals to 10. For all x and y belongs to N. That is the set of natural numbers. I'm again repeating the question. Each of the following defines a relation on the set capital N of positive integers. First is R such that x is greater than y. Second is S such that x plus y equals to 10. And third is T such that x plus 4y equals to 10 for all x and y belongs to M. Determine which of the relations are number one reflexive, number two symmetric, number three transitive, and number four antisymmetric. First of all, reflexive. For reflexive, I hope that you all know, for reflexive relation, ordered pair x must belongs to the relation. For every x belongs to the set. सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑर्डर पेयर अपने ही एलिमेंट के साथ रिलेशन के अंदर होने चाहिए. अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है यहाँ पे दैट इज r such that x is greater than y. तो क्या कोई ऐसा नंबर है such that वो अपने ही नंबर के साथ रिलेटेड भी हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर जाए? ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा. सिमिलरली जब आप लोग s के ऊपर आओगे, सेकेंड रिलेशन के ऊपर आओगे, s such that x plus y equals to 10. यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो सकती है 5 plus 5 equals to 10, मतलब सिंगल एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड है, लेकिन हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है. सिमिलरली थर्ड रिलेशनशिप इज x plus 4y equals to 10. ये भी रिलेशनशिप आपको किसी सिंगल एलिमेंट के लिए तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हर एलिमेंट के लिए दिस रिलेशन इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड. सॉल्यूशन लिखो for reflexive, आगे लिख लो none is reflexive. For example, ordered pair 1 1 does not belongs to R, S and T. If we talk about only single ordered pair, that is 1 1, it does not belongs to the relation R, does not belongs to the relation S, and does not belongs to the relation T. तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन किसी भी रिलेशन में सेटिस्फाइड नहीं है. आगे लिखो नंबर 2 सिमेट्रिक. Now we want to check which of the following these three relations is symmetric. So सबसे पहले we will talk about R. लिख लो take x is equals to 3 and y equals to 6. कोई भी हमने एक एलिमेंट सपोज किया है अपनी मर्जी से. take x is equals to 3 and y equals to 6. Then clearly
then clearly y is greater than x, but x is not greater than 1. देखो अगर आप लोगों को सिमेट्री की डेफिनेशन याद हो, सिमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स मस्ट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन. ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स भी हमारे पास सेम रिलेशन के अंदर होना चाहिए. अब यहाँ पे रिलेशन क्या है? x इज ग्रेटर देन y, मतलब हमें क्या प्रूव करना है? इफ x इज ग्रेटर देन y, देन y मस्ट बी ग्रेटर देन x. दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन R. अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंडीशन तो होल्ड हो रही है, y इज ग्रेटर देन x, बट इस केस में x ग्रेटर देन y नहीं आएगा. तो मतलब जो यहाँ पे रिलेशन R है, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, this relation is not symmetric. R is not symmetric. R is not symmetric. Now we will check the relation S. Is S symmetric? लिख लो आगे. If ordered pair XY belongs to relation S, if ordered pair XY belongs to relation S, तो देखो ये रिलेशन क्या कहता है? If ordered pair XY belongs to relation S, then according to S, x plus y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 के इक्वल. Then x plus y equals to 10 implies that अगर x plus y 10 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि y plus x is also 10. If x plus y equals to 10, then y plus x is also 10. Implies that ordered pair yx belongs to the relation S. Implies that ordered pair yx belongs to relation S. अगर ordered pair symmetry की definition यही कहती है ना, if ordered pair xy belongs to relation R, then ordered pair yx must belongs to relation R. और यहाँ पे relation किस तरह से define किया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट को जब आप दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? 10. तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. इफ ऑर्डर्ड पेयर xy बिलोंग्स टू द रिलेशन S, देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन x plus y किसके इक्वल है? 10 के इक्वल. either you write x plus y or you write y plus x. this is one and the same thing. So y plus x is also 10. So y plus x is 10 means ordered pair yx belongs to the relation S. आगे लिख लो. Hence S is symmetric. Hence S is symmetric. Now let us check for the relation T. Again देखो, आगे लिखो. Also for x is equals to 6 and y equals to 1. If we are having x is equals to 6 and y equals to 1, x plus 4y किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल. हम लोगों ने कोई भी दो एलिमेंट्स अगेन अपनी तरफ से ही यहाँ पे अज्यूम किए हैं, x6 और y1. अगर ऑर्डर पेयर xy रिलेशन T के अंदर है, तो रिलेशन T क्या कहता है? x plus 4y किसके इक्वल होना चाहिए? 10 के इक्वल. हम लोगों ने ऑर्डर पेयर क्या ले लिया? 6-1. तो मतलब x plus 4y, x की जगह पे 6 पुट करोगे, y की जगह पे 1 पुट करोगे. 6 plus 4 दिस इज इक्वल्स टू 10. हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पे T की. होल्ड्स. आगे लिख लो. x plus 4y equals to 10 holds. That is ordered pair 6-1 belongs to the relation T. तो यहाँ से हमारे पास क्या मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर जो 6-1 है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन T को. लेकिन सिमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर xy belongs to the relation, then ordered pair yx also belongs to that relation. तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 6-1 तो रिलेशन T के अंदर आ गया, बट अगर हम इसका चेंज कर दें, ये ऑर्डर्ड पेयर 1-6 कर दें, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन T को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा. ऑर्डर्ड पेयर 1-6 does not belongs to the relation T. यहाँ पे देखो, पुट करो वैल्यू, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 6. 6 4s are 24 और प्लस 1 ये क्या बन जाएगा? 25, which is not equals to 10. तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है.
Therefore, T is not symmetric. Therefore, T is not symmetric. आगे नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव. Transitive. According to the definition of transitive relation, a relation R is said to be transitive if we are having ordered pair XY belongs to relation R and ordered pair YZ belongs to relation R, then ordered pair XZ must belongs to relation R. अगर ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर जाए तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव. ठीक है, लिखो आगे. लेट ordered pair XY belongs to relation R. Let ordered pair XY belongs to relation R and ordered pair YZ belongs to relation R. And ordered pair YZ belongs to relation R. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन R, यहाँ पे रिलेशन R क्या दिया गया कि अगर ऑर्डर पेयर X का रिलेशन में है तो X must be greater than Y. Similarly, if ordered pair YZ belongs to relation R, then Y must be greater than Z. अब देखो बेटा, if X is greater than Y and Y is greater than Z, it means that X is greater than Z. And if X is greater than Z means ordered pair XZ must belong to relation R. Therefore, R is transitive. Therefore, R is transitive. ठीक है, R यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया हमारे पास. अब हम लोगों ने ये कंडीशन चेक करनी है नेक्स्ट रिलेशन दैट इज S के लिए. आगे लिख लो. Consider ordered pair 3, 7 belongs to relation S. Ordered pair 3, 7 belongs to relation S. Since 3 plus 7 equals to 10. ठीक है. Also, ordered pair 7, 3 belongs to relation S. Since 7 plus 3 is also 10. ठीक है. अब according to the definition of this transitive relation, we are having if ordered pair XY belongs to relation R and ordered pair YZ belongs to relation R, then ordered pair XZ must belongs to relation R. अब यहाँ पे देखो, ordered pair XY belongs to relation Z, ordered pair YZ belongs to relation S. तो इसकी सेकंड पोजीशन और इसकी फर्स्ट पोजीशन सेम है. इसकी सेकंड पोजीशन और इसकी फर्स्ट पोजीशन सेम है. एलिमेंट क्या रहना चाहिए, X और Z, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट. तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या बचता है, 3 and 3. तो क्या 3 और 3 रिलेशन S को बिलोंग करता है, नहीं करता. देखो 3 plus 3 करोगे तो क्या आएगा, 6 which is not equals to 10. ठीक है, हमारे पास रिलेशन S क्या है, X plus Y equals to 10. But according to this definition, 3 plus 3 क्या बन जाएगा, 6 which is not equals to 10. It is not equals to 10. Therefore, S is not transitive. Therefore, S is not transitive. Now we want to check our relation T. Is T transitive or not? लिखो. Consider ordered pair XY belongs to the relation T. So according to this definition, if ordered pair XY belongs to relation T, then we are having X plus 4Y equals to 10. ठीक है. And let ordered pair YZ belongs to relation T implies that Y plus 4Z is equals to 10. This is according to the definition of T, relation T.
अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि ऑर्डर पेयर एक्स जेड जो है दैट मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन टी। तो अगर ऑर्डर पेयर एक्स जेड है वो रिलेशन टी में आएगा, मतलब हमारे पास x प्लस 4z किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर x y t में है, ऑर्डर पेयर y z t में है, then we must have ordered pair x z belongs to relation t। हमारे पास ये चीज आनी चाहिए। अब देखो क्या ये चीज हमारे पास रिलेशन टी के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके लिए कंसीडर करो x प्लस 4z, कंसीडर x प्लस 4z, दिस इज इक्वल्स टू, यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 10 माइनस 4y। इट इंप्लाइज दैट 4z की वैल्यू क्या आएगी यहां से 10 माइनस 1। एडिंग these two, x plus 4z will be 10 minus 4y plus 10 minus 1. This is equals to 20 minus 5y. ठीक है, which is not equals to, this is x plus 4z. This is not equals to 10. ठीक है, ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं किया। Therefore, if ordered pair xz belongs to relation T, then x plus 4z is not equals to 10. Therefore, relation T is not transitive. Therefore, relation T is not transitive. The last case, antisymmetric. Last case is for antisymmetric. According to the definition of antisymmetric relation, according to the definition of antisymmetric relation, जी Vaibhav, please wait for 2 minutes. Antisymmetric, if x is greater than y and y is greater than x, then x must be equals to 1. Antisymmetric की definition क्या कहती है, if ordered pair x y belongs to the relation and ordered pair y x belongs to the relation, then x must be equals to 1. ये आप लोग स्टार्ट करो, आप लोगों को मैंने 3 पार्ट्स करवा दिए हैं। एंटीसिमेट्रिक देखो वेरीफाई कर सकते हैं। For antisymmetric, the definition of antisymmetric relation is if ordered pair xy belongs to relation R and ordered pair yx belongs to relation R, then x must be equals to 1. Consider karo, if x is greater than y and y is greater than x, then x must be equals to y. Then R is antisymmetric. देखो ये इसी में चलेगा, ordered pair 1 1 belongs to R. Greater than equals to के लिए हम कह सकते हैं ये, if 1 is greater than equals to 1, 1 is greater than equals to 1, then 1 equals to 1. Then R can be antisymmetric. Second part, for S में क्या है हमारे पास, S is the relation x plus y equals to 10. Consider ordered pair 2, 8. Now 2 plus 8, let 2, 8 belongs to S. Now 2 plus 8 is equals to 10 and 8 plus 2 is also equals to 10. But 2 is not equals to 8. So S is not antisymmetric. S antisymmetric nahi hai yahan pe. After that, we will talk about T. Let ordered pair xy belongs to relation T. If ordered pair xy belongs to relation T, then according to this relation, x plus 4y equals to 10. ठीक है? Also, ordered pair yx. देखो यही कंडीशन थी, if ordered pair xy belongs to R, ordered pair yx belongs to R, then x is equals to 1. Ordered pair yx belongs to relation T implies that y plus 4x is equals to 10. Now we are having these two equations, both having right hand side same, so we can equate left hand side equating
left hand side, we get x plus 4y equals to y plus 4x. Implies that 4x minus x is equals to 4y minus y. Implies that 3x is equals to 3y, 3 and 3 will be cancelled out, implies that x is equals to 1. So we have considered if ordered pair xy belongs to the relation and ordered pair yx belongs to the relation, then x is equals to 1. It means that the relation P is antisymmetric. Next topic is functions. Write down the definition. A function, we used to denote function with small f. A function f from the set A, a function f from the set A into a set B, a function from a set A into a set B is a relation from A to B, such that each element of A is related to exactly one element of set B. Exactly one element of set B. I am again repeating, a function f from a set A into a set B is a relation from A to B such that each element of A is related to exactly one element of set B. It is denoted by इस तरह से. It means that f is a function from A to B. F is a function from A to B. For example, let us suppose we are having two sets A and B. In this set, we are having elements A, B, and C. In this set, we are having elements, let us suppose 1, 2, and 3. If A is related to element 3, B is related to 2, and C is related to 1. This is called a function and is written as the value of f of A. Value of f of A. A is related to 3 means f of A equals to 3. Similarly, value of f of B, this is equals to 2, and the value of f of C, this is equals to 1. Okay? Again, let us suppose we are having a function like this, f from A to B, A, B, C, 1, 2, 3, 4. Let us suppose we are having a function like this. Let us suppose A is related to A and A is also related to 2. B is related to 3 and C is related to 4. Now, this is not a function. Why this is not a function? Because A is related to 2 elements. हम लोगों ने definition क्या लिखी है? Every element of set A is related to exactly one element of set B. तो हर element की एक single image होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. Let us take one more example. Let this be a function from A to B, in which we are having element A, B, and C, and in the set B we are having only one element. Image of A is 1,
image of B is 1, image of C is 1. This is a function. No doubt, every element has same image, but according to our definition, every element of set A has a unique image. हर element की एक ही image होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. यहाँ पे A element की 2 images आ गई थी, इसलिए ये function नहीं बना. यहाँ पे हर element की image तो है ना, एक ही image है, A की भी 1 है, B की भी 1 है, C की वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर element की एक image होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. If we are having a function like this, let us suppose we are having two sets A and B, A, B, C, 1, only one. The image of A is 1, image of B is 1. And this element C in set A, it is having no image. Then this is again not a function. ये भी function नहीं है. क्यों function नहीं? Because element C has no image. ठीक है? If we are having a function like this, A and B, A, B, C, 1, 2, 3, 4. A की image 1 है, B की image 2 है, C की image 3 है. This is a function. Set A के हर element की कोई ना कोई image है. Every element of set A has a image. यहाँ पे जितने मर्जी elements बच जाएं, जिनकी कोई भी free image नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए. ठीक है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन द सेट बी. एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं है. ठीक है? सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. नेक्स्ट इज Next is domain of a function. Domain of a function. Definition is domain of a function. Let f be a function. Let f be a function from A to B. Let f be a function from A to B. The set A is called. The set A is called domain of the function f. The set A is called domain of the function f. जहां पे function define हुआ, where we are defining the function, that set is known as domain of the function. Next is codomain of a function. Codomain of a function. Let f be a function from A to B. Let f be a function from A to B. The set B is called. The set B is called codomain of the function f. The set B is called codomain of the function f. Again I am repeating beta, paper में definition आती है तो you have to write definition as well as example. ठीक है? example भी देनी है आपने. Next is this is the definition of function, this is the definition of domain, this is the example of range also. ठीक है? Next is range of the function. Range of the function. Range of a function. The range of a function. The range of a function is the set of images. Is the set of images of its domain. Is the set of images of its domain. In other words,
we can say it is a subset. It is a subset of its codomain. It is a subset of its codomain. For example, this is a function, domain of the function f. I am taking this example, beta. Domain of the function f, this is the set of the elements of A. ठीक है, डोमेन क्या आएगी फंक्शन की ABC, जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया गया. कोडोमेन of the function f is 1, 2, 3 and 4. जो हमारे पास सेट B है, सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, these all elements belongs to the codomain. After that, range of the function. Range of the function में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 2 and 3. जो एलिमेंट्स सेट A के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, that elements belongs to range. ठीक है? So there is a difference between codomain and range. Codomain, all the elements of set B is called the codomain, and the range is those elements of set B which are images of the set A. So range is the subset of codomain. ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है. सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हो सकती हैं, तो सारे एलिमेंट्स अगर इसमें आ गए तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा. यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है. सो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है कोडोमेन में और रेंज में. रिलेशंस में लास्ट टाइम एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था व्हाट अबाउट कोडोमेन. तो कोडोमेन बेटा रिलेशंस के अंदर नहीं आती है, इट इज इन द फंक्शंस. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज. कोडोमेन all the elements of the set B, range all the elements of set B which are the images of the elements of set A. After that, we are having image of an element. Next definition is image of an element. If the element X, if the element X of capital A corresponds to Y, under the function f, then Y is the image of f. Then Y is the image of X under f. Y is the image of X under f and is written as f of x is equals to 1, and is written as f of x is equals to 1. And we say that x is pre-image of 1. Pre-image. X is pre-image of 1. A की इमेज 3 है, पर 3 की प्री-इमेज क्या है? A. B की इमेज 2 है, but pre-image of 2 is B. Image of C is 1, but pre-image of 1 is C. ठीक है? Next is types of functions.
Types of functions. Types of functions. First of all, first type is injective. Injective or one function. Injective or one function. This is injective or one function. Write down the definition. Let f from x to y. Let f from x to y be a function. Be a function. The function f is called. The function f is called one function. The function f is called one function or injective if different elements in x, capital X, if different elements in x have different images in y. If different images in x have different images in y. That is if f of x1 is equals to f of x2 implies that x1 is equals to x2. That is if f of x1 is equals to f of x2 implies that x1 is equals to x2. For example, let us suppose we are having two sets x and y, and there is a function f from x to y, and we are having the elements 1 and 2 in the set x and a and b in the set y. Suppose the image of 1 is b and image of 2 is a. Okay? Every element has different image. Then the function is said to be 1. Next is next type is surjective or onto function. Surjective or onto function. Again, let f from x to y. Let f from x to y be a function. Then the function f is called. Then the function f is called surjective function. Then the function f is called surjective function. If each element in y, if each element in y is the image of, if each element in y is the image of at least one element in x, is the image of at least one element in x. That is for every y belongs to y, f of x is equals to y, where x belongs to x. That is for every y belongs to y is equals to fx or f of x is equals to y for every x belongs to x. For example, let us suppose we are having a function from x to y, ABC. Let us suppose we are having elements 1 and 2. Suppose the image of A is 2, image of B is also 2,
and image of C is 1. So this is called onto function. Means every element in Y must have some pre-image. इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. सो दिस इज कॉल्ड onto function. Next is bijective function. Bijective function. Bijective function, or it can be one-to-one onto function. जो 1-1 और onto दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. 1-to-1 onto function, a function which is both injective, a function which is both injective and surjective. A function which is both injective and surjective is called 1-1 function. Is called 1-1 function. For example, f is a function from a to b, a b c d, 1 2 3 4. 1-1 भी होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब सेट वी आर टेकिंग द फंक्शन फ्रॉम x to y. तो सेट y में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. So this is called 1-1 onto function. Next type is into function. Next is into function. Let f from x to y be the function. Let f from x to y be the function. The function f is called into function. The function f is called into function if the range of f is not equals to codomain of y. If the range of f is not equal to codomain of y, जहां पर range और codomain same ना हो, so that function is called into function. For example, range of the codomain of the function is this is 1, 2, 3 and 4, but the range of the function is 1, 4. This is a function, but codomain and range is not same. This function is called into function. Next type is you can have a question in 5 marks, explain all the types of the function. Then you have to write all the types and you have to give the examples also. Next is many one function. Next is many one function. Let f from x to y. Let f from x to y be a function. The function f is called many one function. The function f is called many one function if there exist two or more, if there exist two or more than two different elements in X
if there exist two or more than two different elements in X having the same image in Y, having the same image in Y. For example, this is a function f from the set X to the set Y. F is a function from X to Y. Suppose we are having only a single element in the set Y. Then all the elements have same image. So this is called many-one function. This is called many-one function. Next definition is equal functions. Next definition is equal functions. Consider two functions. Consider two functions f and g. Consider two functions f and g from a set to a set Y. From a set X to a set Y. The functions f and g, the functions f and g are called equal functions, if and only if f of a equals to g of a for every a belongs to domain of f and domain of g. जो element a आया है, it comes from domain of f and g. For example, let us suppose we are having a function f from x to y, and also we are having a function from the same set x to y. In the set x, we are having elements, let us suppose 1, 2, and 3. In this, let us suppose we are having a and b. Image of f x, 1 under f is b, 2 under f is again b, 3 under f is a. It will be same in this set also. We can write f of 1 equals to b, f of 2 equals to b, and f of 3, this is equals to a. If we talk about the set g, g of 1 is again equals to b, g of 2 is again equals to b, and g of 3, this is equals to a. So these two functions are equal. So this is the definition of equal functions. This is called equal functions. Next, we are having identity functions. Next, we are having identity functions. Consider any set capital A. Consider any set capital A. The function f from A to A. The function f from A to A is called identity function. If each element of set A, has image on itself, For example, let us suppose we are having a set A in which elements are 1, 2, 3. Then the function is said to be identity if
Image of 1 is again 1, image of 2 is 2, and image of 3 is 3. That is, f of a is again equals to a for every a belongs to the set A. This is called identity function. Next definition is, next is invertible function. Invertible function, a function f from x to y, a function f from x to y is invertible if f is bijective. If f is bijective, that is, if f is if f is 1 1 and onto, if f is 1 1 and onto. For example, let us suppose a function f from x to y, ABC 1 2 and 3. This function is 1 1. This function is onto also. So f inverse exists from the function y to the function x. That is 1 2 3 a b and c. A की इमेज 3 थी तो 3 की प्री इमेज क्या आएगी a, b की इमेज 2 है तो 2 की प्री इमेज b, c की इमेज 1 है तो 1 की प्री इमेज क्या है c. लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब या तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है या फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, तो फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल देखो, let us suppose the function is not 1 1 but the function is onto. 1 1 नहीं है, a की इमेज 2 है, b की इमेज 2 है, c की इमेज 1. ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 नहीं है. क्यों नहीं है 1 1? बिकॉज the element a and the element b has the same image. This is 2. तो जब हम इसका onto है, यहाँ पे हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. तो यहाँ पे जब हम लोग f इनवर्स निकालेंगे, f इनवर्स will be from y to x. In y we are having elements 1 and 2, and in x we are having elements a, b and c. a की इमेज 2 थी तो मतलब 2 की प्री इमेज क्या थी a. b की इमेज भी 2 थी मतलब 2 की प्री इमेज क्या थी b. c की इमेज 1 थी तो मतलब 1 की प्री इमेज क्या थी c. तो मतलब जब हम लोगों ने इनवर्स निकाला, we got this type of function, but this is not a function. ये तो फंक्शन ही नहीं रह गया. why फंक्शन नहीं है ये? because we are having an element in the set y which is having 2 images. but function की definition क्या कहती है? according to the definition of function, each element in the domain set must have a unique image in the range set. तो इसलिए ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं रहा. दूसरा केस देखते हैं. if we are having a function which is only 1 1 but not onto. फंक्शन 1 1 तो है लेकिन onto नहीं है. let it be a की इमेज b है, 2 की a है, 3 की c है. this function is 1 1 but this function is not onto. onto क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेट y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है d जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है. तो जब हम यहाँ से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, this is from the set y to the set x. this is a b c d and this is 1 2 3. 1 की इमेज b थी तो b की प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज a है, a की प्री इमेज 2 है, 3 की इमेज c है, c की प्री इमेज 3 है. मतलब in the set y, in the domain set, we are having an element which have no image. यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, but according to the definition of function, each element in the domain set must have some image. So ये function की ही definition को satisfy नहीं करता है, इसलिए for invertible function, function must be 1 1 as well as
onto, ये 1 1 और onto दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाएगी तो फंक्शन ही यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, question is, let A equals to B equals to, this is the set 1 2 3 4 5, define functions, define functions f from A to B if possible, define functions f from A to B if possible such that number one f is 1 1 and onto, number two f is neither 1 1 nor onto, third is f is 1 1 but not onto, and fourth is f is onto but not 1 1. Solution है इसका, define f from A to B, define, repeat कर रही हूँ मैं क्वेश्चन फिर से, let A equals to B equals to 1 2 3 4 5, define functions f from A to B if possible such that number one f is 1 1 and onto, number two f is neither 1 1 nor onto, number three f is 1 1 but not onto, and number four f is onto but not 1 1. So solution है इसका, define f from A to B such that f of x is equals to x, such that f of x is equals to x for all x belongs to A and B. Set A for all belongs to set A and B because both the sets are same. That is f of 1 equals to 1, f of 2 equals to 2, f of 3 equals to 3, f of 4 equals to 4, f of 5 equals to 5. That is different elements of A, that is different elements of A, set A, have different images in B, have different images in B. 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है और 5 की 5. Therefore, f from A to B, therefore f from A to B is 1 1, is 1 1. देखो 1 1 फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या थी, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, is 1 1. Also we observe that for each y belongs to B, there exists, this is the sign of there exists, ulta e, this is the sign of there exists
x belongs to a such that x belongs to a such that y is equals to fx or f of x is equals to 1. Therefore f is onto. Onto की कंडीशन क्या होती है कि सेट बी के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. सो द फंक्शन इज onto. तो पहला सेटिस्फाइड हो गया. f is 1 1 and onto. पहला पार्ट प्रूव्ड है यहाँ पे. आगे सेकंड पार्ट इसका डिफाइन. सेकंड पार्ट है इसका. सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? f is neither 1 1 nor onto. ना ही फंक्शन हमारे पास 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ना ही onto की कंडीशन को. कंसीडर करो. डिफाइन f from a to b. Define f from a to b such that f of x is equals to 1. Such that f of x is equals to 1 for all x belongs to a and 1 belongs to b. That is f of 1 is equals to 1, f of 2 equals to 1, f of 3 equals to 1, f of 4 equals to 1, and f of 5 equals to 1. That is different elements of A have same images in B. Different elements of A have same images in B. मतलब हमारे पास हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पे क्या है? 1. हमारे पास हर एलिमेंट की यहाँ पे इमेज क्या है? 1. ठीक है. तो ये 1 1 की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है. onto की भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट बी के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है. सो दिस इज द फंक्शन व्हिच इज नीदर 1 1 nor onto. This is the function which is neither 1 1 nor onto. तो आगे आप लिख सकते हो therefore f from a to b is not 1 1 and not onto. Third part is the since a equals to b. Third part में प्रूफ क्या करना है? f is 1 1 but not onto. Since a equals to b. Since a equals to b. Next line में therefore there is no function. Therefore there is no function which is 1 1 but not onto. ऐसा कोई फंक्शन नहीं बनेगा कि जो 1 1 आ जाए बट onto ना हो. यहाँ पे देखो अगर 1 1 होगा तो मतलब हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी. अगर हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तो बी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं बचेगा जिसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसलिए अगर 1 1 होगा तो onto भी होगा. ठीक है. तो थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ऐसा फंक्शन नहीं बन सकता. आगे फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? f is onto but not 1 1. onto तो है लेकिन 1 1 नहीं है. लिख लो a equals to b. सेट a सेट b के इक्वल है. there is no function which is onto but not 1 1. Which is onto but not 1 1. हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. तो ऐसा हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा. ठीक है.
तो ये एक एग्जांपल थी इसके ऊपर। इसके बाद सेकंड, इसके ऊपर सेकंड आर्टिकल है, कंसिडर द फंक्शन, consider the function f from n to n. Consider the function f from n to n, where capital N is the set of natural numbers, where capital N is the set of natural numbers defined by f of n is equals to n square plus n plus 1, defined by f of n is equals to n square plus n plus 1. Show that f is 1 1 but not onto. Show that f is 1 1 but not onto. फिर से क्वेश्चन सुन लो। कंसिडर द फंक्शन f from n to n, where n is a set of natural numbers defined by f of n is equals to n square plus n plus 1. Show that f is 1 1 but not onto. प्रूफ लिखो इसका। गिवन फंक्शन f from n to n, given function f from n to n, where n is a set of natural numbers, defined by f of n is equals to n square plus n plus 1. Defined by f of n is equals to n square plus n plus 1. तो सबसे पहले हमें देखना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। let n1 and n2 belongs to capital N such that f of n1 is equals to f of n2 according to the definition of 1 1 function, such that f of n1 is equals to f of n2. Now we are having f of n is equals to this. We want to find the value of f of n1. Replace n with n1. We get n1 the square plus n1 plus 1. Similarly, n2 the square plus n2 plus 1. 1 and 1 will be cancelled out. It will be n1 the square minus n2 the square plus n1 minus n2 equals to 0. A square minus b square, it will be n1 minus n2 into n1 plus n2, plus we can combine these two terms, that is n1 minus n2 equals to 0. n1 minus n2 and n1 minus n2, this is common in both the terms. Inside it will be n1 plus n2 plus 1 is equals to 0. So product of two terms equals to 0 implies that either n1 minus n2 equals to 0 or n1 plus n2 plus 1 is equals to 0. Implies that n1 is equals to n2 or n1 plus n2 equals to minus 1. तो ये तो कंडीशन होल्ड नहीं होगी। क्यों कंडीशन होल्ड नहीं होगी? Because we are in the set of natural numbers. Natural numbers means counting numbers which does not belongs to, हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये तो कंडीशन नहीं होगी। And according to this condition, we are having if f of n1 is equals to f of n2, then n1 is equals to n2. तो 1 1 के लिए इस कंडीशन का होल्ड होना जरूरी है। Therefore, function is 1. Definition में आपको बताया गया था, if f of x is equals to f of y, then x must be equals to y. Therefore, the function is 1. Next, we want to check the onto condition. Next line में लिखो, to check whether function is onto. To check whether the function is onto, let m belongs to capital N
हम लोग इस रेंज में एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं m such that f of n is equals to m. onto की यही डेफिनेशन की थी हमने. we will be having one element in the range such that f of x is equals to y, where x कहाँ से आएगा, डोमेन में से. यही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है. Now the value of f of n is n square plus n plus 1 is equals to n. It can be written as n square plus m plus 1 minus m equals to 0. This is quadratic equation. Ax square plus bx plus c equals to 0. So how we can solve the quadratic equation? The value of x is given by minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. Same condition we will apply over here. It will be minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. So it will be minus 1 plus minus 1 minus, opening the brackets, it will be 4 plus 4n divided by 2. It will be minus 1 plus minus 4n minus 3 divided by 2. Where जो m है, m कहाँ से आया है? नेचुरल नंबर्स में से. आप लोग यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6, हर वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी. Therefore, function is not onto. Therefore, function is not onto.